Today's topic is democracy. The word democracy comes from the Greek words of demos and kratia. Demos means people or public, kratia means power. Democracy is a way of life where the individual has a role to play in the working of the government and in everyday life. The person who has a voice and plays a role in the society is a democratic person, and the state allows him all kinds of freedom so that he can develop him and progress as he wishes to and succeed in life. Democracy has certain basic principles, but those principles change themselves according to the needs of the society in which democracy is a form of government. Democracy has certain merits and certain demerits. The merits are that the public plays an important role due to the provision of elections, where a popular government is elected and a person who is supposed to be a favorite of the public is voted to power. Here, the public feels that they can relate to the person in power and can tell him all their woes and problems. Secondly, democracy has a very important component, and that is freedom. It allows its people to be free and to express themselves in each and every way. It allows people to choose their vocation, their education, their form of life, their family, their religion, and other such kinds of freedom, because of which the government is often valued for its complete allowance of freedom to the general public. All individuals are free to progress and express themselves and understand themselves and self determine themselves as they wish. But this freedom has its limitations. They are only permitted till as far as they do not hamper another person's freedom. Thirdly is equality, which means equal rights economically, legally, lawfully, socially, and a lack of discrimination in each and every field. Brotherhood is the final component of democracy, where all men are considered to be naturally equal, since we are all born out of nature. Therefore, any kind of exploitation and inhibition is prohibited, except if it is harmful. Otherwise, anyone can express themselves and do whatever they like, insofar as it is not harmful to society in general or to others. The demerits of democracy is that the elected representatives are often unworthy people who have somehow won the affection of the general public, and then they, even though they are elected, they do not have that kind of commitment to the public as is expected from them. Secondly, the main demerit of democracy is that red tapeism and long-winded government processes take a very long time. The slow functioning of the government often delays decisions which should be taken at once, and problems should be solved as soon as possible. On the other hand, long deliberations often lead to indecision and lack of proper commitment by the government for the public. This also leads to corruption, because officials, in order to serve their own personal purposes, cheat the public, and so these long-winded processes often allow them this kind of ease, for which they are often found to be corrupt. Apart from this, another problem with democracy is that these elections often make the public feel that they are not properly treated, and they feel that there is a kind of indecision in them,
and the majority is also feels very dissatisfied with the government. It brings about a lot of instability in the minds of the people. Another demerit of democracy is the popular government often permits the majority to exploit the minority because the minority hardly has a voice in a popular government. This leads to mobocracy, and this mobocracy gradually leads to voter apathy. Therefore, democracy, even though it has a lot of merits, has very grievous failings as well. In spite of all this, democracy still is a very popular form of government simply because it allows the public to have a voice and can express itself and tell its grievances clearly. Now we come to the Hindi version. प्रजातंत्र एक इस प्रकार का सरकार है जहाँ पे जनता स्वयं पर स्वयं के द्वारा ही शासन करती है, अर्थात इसमें जनता का बहुत अधिक योगदान होता है। जनता अपने मर्जी से चुने हुए किसी प्रतिनिधि को अपना नेता बनाती है और उसके प्रति वह अपने आप को जवाबदेह मानती है। इसी के कारण व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति भी इसीलिए हो पाती है क्योंकि जनता को लगता है कि अगर उनका पसंदीदा नेता होगा तो वो उनकी आवश्यकताओं को समझेगा और उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। इस वजह से प्रजातंत्र में व्यक्तिवाद का बहुत अधिक बोलबाला होता है और व्यक्ति सरकार में एवं सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। वोटिंग की या चुनाव की जो प्रक्रिया है, इसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करता है और वो राजनीति एवं समाज दोनों में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। प्रजातंत्र के कुछ गुण भी हैं। प्रजातंत्र जनता का शासन होता है क्योंकि जनता की भूमिका यहाँ प्रमुख होती है। जनता अपने आप को सबसे महत्वपूर्ण मानती है और अपने ही पसंद के किसी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनाती है। अपने पसंद के किसी जात वर्ग को वो प्रधानता देती है और अपने ही पसंद के किसी पार्टी को वो आगे बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त प्रजातंत्र में बोलने की स्वतंत्रता, वेतन की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता, शिक्षा की स्वतंत्रता, स्वास्थ्य की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, परिवार की स्वतंत्रता, मूल्यों के अधिकार एवं कर्तव्य सब होते हैं। इस स्वतंत्रता के कारण व्यक्ति अपने आप को अपनी मर्जी का मानता है और वो अपने कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकने में सक्षम समझता है क्योंकि सरकार उसे हर प्रकार की सुविधा प्रदान करने के लिए तत्पर होती है। इसके अतिरिक्त इसमें समानता है, अर्थात सभी के समान अधिकार हैं। जो जिस प्रकार से जीना चाहे वो उसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, तथापि वह दूसरे के किस अधिकारों का यदि किसी प्रकार से हनन नहीं करता तो वह स्वतंत्र है। और इसमें भाईचारे का भी योगदान होता है ताकि सभी मनुष्यों को समान माना जाए और किसी का शोषण न हो पाए, कोई भी अभाव का जीवन न व्यतीत करे, सभी सुख शांति से रहें। यही प्रजातंत्र के मुख्य गुण हैं। परंतु प्रजातंत्र में कुछ अवगुण भी दिखाई देते हैं। सबसे पहले इसमें अल्पमत का कोई स्थान नहीं होता। अधिकांशतः जनता अशिक्षित होने के कारण यह समझ नहीं पाती है कि किस व्यक्ति का चुनाव होना चाहिए। अतएव अयोग्य व्यक्ति भी कई बार चुन लिए जाते हैं और वे एक महत्वपूर्ण भूमिका पे पहुंच जाते हैं। इसमें क्योंकि अधिक से अधिक लोगों का
की स्वतंत्रता होती है, इसीलिए भीड़ के शासन होने का बहुत बड़ा डर रहता है और अनुशासन की कमी होती है। अतएव यहाँ पे शक्ति का दुरुपयोग होने लगता है। राजनैतिक दलबंदी और दांव पेच के कारण जिन मूल्यों के लिए प्रजातंत्र को चुना जाता है, उन्हीं मूल्यों को प्रायः समाप्त कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अनैतिकता और भ्रष्टाचार की प्रधानता होती है, क्योंकि इसमें लाल फीताशाही है, बहुत लंबे चौड़े राजनैतिक क्रियाएं हैं, जिसके कारण कि कोई भी काम जल्दी और समय अनुसार नहीं हो पाता है, जिससे धन का दुरुपयोग होता है और जनता के ही धन का विनाश होता रहता है। जातिवाद, संप्रदायवाद आदि राष्ट्रहित को पूरी तरीके से समाप्त कर देता है। ये सारे बहुत बड़े बड़े दोष प्रजातंत्र में पाए जाते हैं। तथापि इसके अतिरिक्त भी प्रजातंत्र आज भी सबसे लोकप्रिय शासन माना जाता है। अधिक से अधिक देशों में इसका स्वरूप मिलता है और वह उसका मुख्य कारण यही है कि प्रजा को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता और सुविधा दी जाती है, उसे अपने आप को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। इसलिए प्रजातंत्र आज भी एक लोकप्रिय शासन है। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम एक नए विषय को लेकर आपके साथ पुनः आपके आगे प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।